Good morning, students. So, how are you, students? So, yesterday we had started a new chapter, students, that is risk assessment and internal control, chapter number 3. And I had tried to explain to you basic, some basic concepts relating to this chapter. So, we had understood what is meant by audit risk and what are its components. So we had understood that audit risk is the probability, is the risk, is the chance that an auditor gives an inappropriate opinion when financial statements are materially misstated. We had also learned that audit risk consists of two components, that is risk of material misstatement and detection risk. And risk of material misstatement at assertion level consists of two further components, that is inherent risk and control risk. So inherent risk which is because of the nature of transactions, which is coming from within the transactions without consideration of any controls. And control risk pertains to the risk, that chance that control systems deployed by the organization, deployed by the company, these will not function effectively. These will not be able to prevent a misstatement or detect and correct a material misstatement. And detection risk, we had understood that it is the chance that procedures used by the auditors would not be able to detect a material misstatements. Okay, and the most important thing we had learned that both inherent risk and control risk, and as a consequence of that, risk of material misstatement, it belongs to the entity, to the company, whereas detection risk belongs to the auditor. Okay, and we had also learned the mathematical equation that audit risk is equal to risk of material misstatement multiplied by detection risk. So fine enough, students. So I have given a quick recap to you of what we had done yesterday. So today, students, we shall be doing these topics, that how does an auditor identify and assesses risk of material misstatement? What are risk assessment procedures? What is the meaning and definition of internal control? And what are the components of internal control? Okay, so these are the four broad areas which we would be trying to cover today. So before starting, students, these are 2-3 test your understanding questions. So would you like to do that? So these questions pertain to audit risk and its components. So just raise your hand on these questions. So test your understanding 1. Now it's a company, it's a startup engaged in providing holistic solutions to the problem of paddy stubble burning. The company is engaged in converting paddy stubble. You must have
read about in newspapers, guys. There is a lot of hue and cry these days on paddy stubble burning because it causes pollution. So when the company is providing solutions to farmers to convert their paddy stubble. Okay. Due to importance given by governments to this issue, companies have entered in the market in past few years. So some companies have entered in the market in past few years, but many of these companies have gone bust. These have been unsuccessful. So you are auditor of a company which is engaged in such business. So what is this question talking about? Which component of audit risk this situation is talking about? Yes, students, which component of audit risk this situation is talking about? Yes, guys, which component of audit risk, or it is more clearly written here, which component of risk or material misstatement is involved? Yes, that's fine enough. It is inherent risk. So we move on to question number 2. A company has devised a control that its inventory of perishable goods is stored in appropriate conditions in a controlled environment. So company has made elaborate procedures that the goods it deals in, these are perishable. It means that these can be damaged in a short span of time. So to prevent damages to its inventory, it has made proper arrangements. So responsibility is fixed on 2 persons to monitor environment using sensors. So company ने उधर sensors भी लगा रखे हैं कि कितना temperature है, so that goods do not destroyed. Maybe these may be agriculture products. So identify the component of risk or material misstatement involved as an auditor of the company. तो किस component की बात हो रही है students? Which component is being talked about? Which component is being talked about in this situation? Yes, control risk, because it relates to the control systems. It shows that the control systems, that responsibility is fixed on some persons, and the controls may not operate effectively. Okay, so this is the control risk. Number 3, Ch-3 Foods Limited is engaged in manufacturing of bread. So the auditors of company have planned audit procedures in respect of recognition of revenues of company. Despite that, there is a possibility that misstatements in revenue recognition are not identified by planned procedures. Which risk is being alluded to? कौन सा रिस्क है स्टूडेंट्स इसमें? इस सिचुएशन में कौन सा रिस्क है स्टूडेंट्स? ऑडिटर ने कुछ प्रोसीजर्स प्लान किए हैं, लेकिन उसके बाद भी पॉसिबिलिटी है कि जो प्रोसीजर्स उसने प्लान किए हैं फिर भी मिसस्टेटमेंट्स रह जाएं. सो which risk is being alluded to? Yes, it is detection risk. So students, as I had told you that this chapter
chapter number 3 is largely based upon essay 315, essay 315. So students, what is the name of essay? अगर आप स्टूडेंट्स इस essay का नाम ही पूरी अच्छी तरह से याद कर लें तो इसी में से आपके कई पॉइंट्स डेराइव हो जाएंगे लिखने के लिए। कभी आप एग्जाम में कुछ चीज भूलते हैं तो सीधा essay का नाम याद कीजिए और उससे ही आपके कई चीजें डेराइव हो जाएंगी। सो essay का नाम क्या है? Identifying and assessing the risk of material misstatement through understanding the entity and its environment. Okay. So essay 315 states that the objective of auditor is to identify and risk and assess the risk of material misstatement. So one is identification and another is assessment. So it consists of two things: identification and assessment. So what is meaning of identification? Identification means to pinpoint, to identify that what is the risk involved, what is the chance involved. And assessing means evaluate. Assessing means evaluate, to see how great or how low the risk is. What is the chance of it happening? So risk is there, but you have to evaluate. You have to evaluate it. You have to assess it. क्या उसकी क्या डिग्री है? Say students, for example, आप किसी कंपनी की सेल्स चेक कर रहे हैं, यू आर वेरीफाइंग सेल्स ऑफ कंपनी एंड यू सी that sales of last year were say 50 crores and this year sales have jumped 200 crores. Okay. Assume there is no change in production capacity of the company. It is a manufacturing company. There is no change in the production capacity of the company. So obviously, as a prudent person, as an alert auditor, you would identify that there is a chance that these sales could be fake. That these sales could be fake. It doesn't mean that these are fake. Now this is the distinctive point. Here you are only identifying and assessing risk. You are only evaluating the chance factor. You are only evaluating the risk factor. Okay. So you would identify that risk and assess, evaluate, keeping in view the circumstances of the company. What is its degree? What are its chances? It may be that due to some reasons the company's turnover has increased. Say the company is a manufacturing company, but during the year it has also engaged in trading activities. It is quite possible. So obviously, but you would identify that risk. At least you would identify it. You would identify and assess this risk and then perform your risk assessment procedures to obtain evidence. Okay. So as per essay 315, the objective of the auditor is to identify and assess the risks of material misstatement. So ये point, ये line, students, you have to remember, this is the key line. ये आपको भूलनी नहीं है. That as per essay 315, the objective of auditor is to identify and assess the risks of material misstatement, whether due to fraud or due to error, at the financial statement levels and the assertion level, at both levels.
ये दोनों चीजें क्या है, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल मींस एट द कंप्लीट बैलेंस शीट लेवल, जब एक चीज का इफेक्ट पूरी बैलेंस शीट को इफेक्ट कर रहा है, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस को इफेक्ट कर रहा है, and individually at assertions level, at individually at transaction level, at account balance level, at say individually at sales level, how large it is, or individually at expenditure level. Okay, how he would assess this? Through understanding the entity and its environment, including entity's internal control, thereby providing a basis for designing and implementing responses to assessed risk of material misstatement. So how he will identify and assess the risk? He would understand the company. So he would gain a complete understanding of the company, what is its nature of business, what which type of industry it operates in, what is the regulatory framework, what is the shareholding pattern of the company, what are its investments, how it is financed. So these are all steps, these are all methods from which the auditor obtains understanding of the company. Okay, so the auditor would identify and evaluate, he would identify and assess the risks of material misstatements by understanding the company. Okay, by understanding the company and its environment, including its internal control, so special emphasis is laid on internal control, कि ऑडिटर को इंटरनल कंट्रोल का भी स्टडी करना है, और उसका पर्पस क्या है इंटरनल कंट्रोल की स्टडी करने का? सो दैट ही इज एबल टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. So that is why in this chapter, students, we shall be reading a lot about internal control. कि what is the meaning of internal control? What are its benefits? What are its limitations? What are its components? So we shall be reading about all these things because of their importance. Because study of internal control helps the auditor in identifying and assessing risk of material misstatement. So how this is going to help the auditor? It say if the auditor has identified and assessed the risk properly, then it would help him to keep his audit risk at an acceptably low level. Okay. So the objective of auditor as an SA 315 is again both the things are written same. It is the breakup. He would identify and assess the risk at financial statement level and assertion level. And for the purpose of identifying and assessing risk of material misstatement, the auditor shall do following things. Number one, identify risks throughout the process of obtaining an understanding of the entity and its environment. So while he is understanding the company, he shall identify the risk throughout this process. Okay, assess the identified risk and evaluate whether they are related to one area or whether they affect financial statements as a whole. So whether they are pervasive, it means they are
their effect is prevailing on many items of the balance sheet, on many items of financial statements, or whether their effect is limited to just one area. Okay, so it is his duty. Relate that identified risks to what can go wrong. So risk तो आइडेंटिफाई कर लिया, अब उसको असेस करना है कि व्हाट कैन गो रॉन्ग. Probability, still he has not found anything. Still at this stage auditor has not found anything. हम स्टूडेंट सिर्फ इस स्टेज पे रिस्क की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं. ओके, consider the likelihood of misstatement and consider that what are the chances of happening it. So क्यों स्टूडेंट्स, why this exercise is important? ये एक्सरसाइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ग्रेटर चांसेस हैं उस पॉसिबिलिटी के मेटीरियलाइज होने के, उस रिस्क के क्रिस्टलाइज होने के, देन ऑब्वियसली द ऑडिटर वुड डिजाइन हिज प्रोसीजर्स इन सच ए वे. Okay, so clear students, now what is, you have understood what is the importance of identifying and assessing risks of material misstatement. Okay, and what is the objective of auditor as per SA 315. Okay, so I am again repeating it at the cost of repeating it, that the objective of auditor as per SA 315 is to identify and assess risks of material misstatement, both at assertion level and financial statement level, by understanding the entity and its internal control, so that he can design suitable responses to those assessed risks. So students, this objective you have to remember, क्योंकि कभी भी आप एग्जाम में कंफ्यूज होंगे या लिखते हुए आपको वर्ड्स नहीं सूझ रहे हैं, तो आपको अगर ये पैरा अगर आपको याद है तो आप इससे डराइव करके अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट सेंटेंसेस में कुछ भी लिख सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? यस यस गाइस. So how students, how the risk is identified by the auditor? So he uses risk assessment procedures. So what are risk assessment procedures? स्टूडेंट्स आपको ध्यान है चैप्टर 2, you remember chapter 2? So what we had learnt in chapter 2? We had learnt in chapter 2 that audit plan includes planned risk assessment procedures. मैंने वहां पे थोड़ा सा आपको स्टूडेंट्स इसके बारे में बताया था. So audit plan includes planned risk assessment procedures. और प्लान में तो वो प्लान थे, that these were planned by the auditor. Now the auditor is going to perform the risk assessment procedures. Okay, so what are risk assessment procedures? सिंपल है, आपने पढ़ा है कि ऑडिटर के लिए जरूरी है टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट. उसी चीज को आप यहां पे मोल्ड कर दीजिए तो वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की डेफिनेशन बन गई. सो इफ यू मोल्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ SA 315 into another form, it becomes the meaning and definition of risk assessment procedures. Okay, so what are risk assessment procedures? Risk assessment procedures are those procedures that are performed to obtain an understanding of the entity and its internal control. Okay, to identify and assess the risk of material misstatement, whether due to fraud or error,
at the financial statement level and assertion level. These are known as risk assessment procedures. So what is the objective of SA 315? If you write it in different way, it becomes the meaning and definition of risk assessment procedures. So these kind of things, students, so I am sharing with you a trick that how if you remember something fundamental, something basic in a topic, in a chapter, then substantially many things would be derived from that. So this is a trick, this is a learning trick which you have to be familiar with. ओके सो जो ऑब्जेक्टिव है उस ऑब्जेक्ट SA 315 में ऑडिटर का द प्रोसीजर्स डिजाइंड by the auditor, the procedures performed by the auditor to achieve that objective are risk assessment procedures. So students, agar if you happen to compare both the parts, like this meaning of risk assessment procedure and this para, objective of SA 315, you would see that both things are same. Here it is in the first para, it is written in the way of the objective of auditor, and in the second para it is written in the way of meaning and definition of risk assessment procedures. All the keywords, all the things are same. So these kind of things are present in a number of ways in your module. So you have to have that eye to spot those things, and I will also be telling you, I will also be helping you. So risk assessment procedures are a basis for identification and assessment of risk of material misstatement at financial statement and assertion levels. Again, the same thing. It is only the explanation which we have already done. However, one point is important, guys. This line is very important, students. Risk assessment procedures by themselves do not provide sufficient appropriate audit evidence. See, students, you have to understand that auditor procedures we had learnt in audit plan consists of risk assessment procedures and further audit procedures. Further audit procedures में जो procedures आते हैं वो हम next chapter में पढ़ेंगे. But risk assessment procedures ka, because their purpose is to just to identify and assess risk of material misstatement, they do not provide sufficient appropriate audit evidence. So they, on which auditor's opinion could be based. So they only identify and assess a particular chance. They only identify and assess possibility of something happening, possibility of some likelihood, but they do not in themselves provide any evidence, provide sufficient appropriate evidence, rather I would say sufficient appropriate evidence on which the auditor's opinion could be based. So for obtaining sufficient appropriate audit evidence, the auditor would have to perform other procedures. What are those other procedures? This we shall be learning in chapter 4 and also partly in this chapter also at the very end.
Okay, clear students? So ये तो students, we have understood the meaning of risk assessment procedures. Now next pertinent question is, what are those procedures? कि हमने risk assessment procedures के बारे में बात तो बहुत कर ली, लेकिन उन प्रोसीजर्स में होता क्या क्या है, कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स? सो स्टूडेंट्स, लाइक से risk assessment procedures include three things. Number one, inquiry of management and others within the entity. Number two, analytical procedures. And number three, observation and inspection. Now ये क्या, what are these things? So we try to understand these, and then we'll come back to your module. So risk assessment procedures. So these are of three kinds: inquiry of management. So I am writing for short, management and other persons within the entity. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? This means asking information, making inquiries from whom? From with the management and other employees within the company. So the auditor would inquire from say those who are responsible for managing the company, say CFO of the company, say director, say or another responsible management person, and say important employees. Like the company may have got an in-house lawyer. Okay, in-house means a lawyer which is employed within the company. So the auditor would ask from his disputes, or what is the status of court cases which are filed by the company, okay, or which have been filed against the company. Similarly, like the auditor may inquire from the marketing personnel regarding the orders which are in hand with the company, and about the sales targets. And similarly, he can also ask information from IT head, who is responsible for design and maintenance of systems. So these kind of things. So what is the purpose of these kind of things? The purpose of inquiry is that by getting responses from these inquiries, auditor can identify certain areas. Okay, like he is asking from the lawyer of the company who is employed in the company. There is a standing lawyer employed in the company on the payrolls of the company. So he is asking from him about the litigation claims. So his purpose in this regard is to ascertain whether the company has disclosed all these things in its financial statements, whether there could be possibility of misstatements in disclosures in this regard.
Okay. Another thing is, another type of risk assessment procedure is analytical procedures. So analytical procedures के बारे में भी स्टूडेंट्स हम डिटेल में we will be studying in next chapter. लेकिन यहाँ पे आप इतना समझें कि एनालिटिकल प्रोसीजर्स आर डिजाइंड, आर परफॉर्म टू get a sort of relationship between financial items and maybe financial and non-financial items. लाइक स्टूडेंट्स, आप एक कंपनी की सेल्स देख रहे हैं, उसको पिछले साल की सेल्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी जो एग्जांपल पहले दिया था उसमें बताया था कि लास्ट ईयर द कंपनीज रेवेन्यूज वाज 50 करोड़ एंड नाउ इट इज 100 करोड़. ओके, सो what you are seeing a trend. So these kind of things are analytical procedures. So these help you to identify the risk. So there is a risk, there is a chance that revenues of the company could be misstated. So these kind of procedures are known as analytical procedures. Like suppose another example could be, suppose you are auditor of a company and as also assume that company deals in one type of product. For the sake of example, assume that company deals in one kind of product. Okay, and you know the plant production capacity. So obviously you can arrive at the sale figure by multiplying the production with the sale price, and further assume that sale price has not changed during the year, and if it has undergone change, you can it is possible to make those calculations. So in this way, overall you are able to make a view that what is the possibility of misstatement in revenues. अगर कंपनी की जो सेल्स हैं वो उसकी प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग ही हैं, ओके, सो देयर वुड बी लेस लाइकलीहुड ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन इट. और अगर कोई वेरिएशन है, देन यू वुड स्पॉट दैट रिस्क एंड देन you have to carry out further procedures. Clear, students? So these type of things are included in analytical procedures. Okay, and number 3 is inspection and observation. So what is inspection, students? Inspection means when you inspect something. Say when you read some paper, when you read some document, when you read some balance sheet, you are inspecting it. Like going through manuals of the company, going through past year's annual report, going through past year's financial statements. These are all examples of inspection. Okay, similarly, when you visit the plant of the company, it is again an example of inspection. आप देख रहे हैं कि you want to visit the plant of the company and you visit that this is the manufacturing facility of the company and this is the nature of business. So you are inspecting the plant. Okay, and another thing is observation.
This is another procedure. So observation means looking at some process performed by another person. Like I have already told you, like you are observing inventory count process. So the management is performing a inventory count process at the year end, and you are you also observe that how it is being done. Okay, so this is an example of observation. So आपको स्टूडेंट्स इन तीनों रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग. So risk assessment procedures are generally of 3 types. Again, I am repeating it. Number 1, inquiry of management and other persons within the entity. So students, इस word को आपने भूलना नहीं है. You have not to forget. Within the entity. So risk assessment procedures are inquiry of management and other persons within that organization, within the entity. If inquiry relates to some outside person, then it becomes another kind of procedure. Then it becomes substantive procedures, about which we would be learning in chapter 4. Okay, so analytical procedures. I have given you a few examples also. And third is inspection and observation. So clear, guys? Yes, students, is it clear to you? So now let us see what is there in your module. So 3 type of risk assessment procedures are given. What is included in risk assessment procedures? So risk assessment procedures shall include the following. Number 1, inquiries of management and others within the entity. So these are some examples given of in the box item. Now, which type of inquiries can be made? Like inquiries towards in-house legal counsel, legal lawyer, which I have hinted at. Inquiries directed at marketing or sales personnel. So even inquiries directed at internal audit personnel. Okay, कंपनी में इंटरनल ऑडिट है, इट इज अगेन पार्ट ऑफ द कंट्रोल सिस्टम. सो इंटरनल ऑडिटर से कई बातें पता चल सकती हैं. ही कैन और he would also be going through reports of the internal auditor. So when he goes through the reports of the internal auditor, then it becomes inspection. However, when he seeks information from the internal audit personnel or from the internal audit department, then it becomes inquiry. Okay, analytical procedures. So this we have already understood. So analytical procedures performed as risk assessment procedures may identify aspects of the entity of which auditor was unaware and may assist in assessing the risk of material misstatement. So that is very important. So what is the importance of analytical procedure, guys? You have to understand that analytical procedures might throw light on some information which auditor cannot obtain, which auditor cannot gather by means of routine checking. So therefore, herein lies the importance of
importance of analytical procedures. So analytical procedures performed as risk assessment procedures may include both financial and non-financial information for establishing relationship. Okay. And number 3 is, so another thing about analytical procedures, that it may help in uh, uh, pointing out, bringing to light certain deviations or trends. Okay, जैसे students we had taken the examples of unusual increase in revenue as compared to past periods. So what we were doing in what we were doing, so we were making a trend analysis. Okay, या हम किसी हम टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी देख रहे हैं, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, और उसको सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करके हमने सेल्स की फिगर अराइव करने की कोशिश की थी. तो these are all examples of analytical procedures which might throw light on some unusual things. That is why analytical procedures are performed as risk assessment procedures. Okay. Observation and inspection. So observation and inspection के क्या examples हैं? Like inspecting entities, premises and plant facilities. This is example of inspection. Reports prepared by the management की internal reports हैं, उनको study करना. Again, this is inspection. And observing entities operation, it is again an example of observation. किसी documents को देखना, again it is an example of inspection. So by inspecting documents, by inspecting some physical assets, the auditor is in a position to identify and assess risks of material misstatement. So the purpose of all these procedures, all these 3 category of procedures which we had learned: number 1, inquiries of management and other persons within the entity; number 2, analytical procedures; number 3, observation and inspection. The purpose of all these 3 is to identify and assess risks of material misstatements when these are performed as risk assessment procedures. Okay. Yes, guys. And another thing, students, information obtained by performing risk assessment procedures and related activities may be used by the auditor as audit evidence to support assessment of risk of material misstatement. Okay. So students, risk assessment procedure से जो भी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को मिलती है, तो उसको जो रिस्क वो असेस करेगा, ऑब्वियसली उसमें उसको सपोर्ट करेगी. ओके. एंड इन एडिशन इट मे सो हैपन दैट while performing risk assessment procedures, the auditor gets some information
which can be used as an audit evidence. Okay, so although these are not planned specifically to gather audit evidence, but it may so happen that auditor may obtain some information which can be used by by performing these risk assessment procedures as audit evidence. Okay, so there are two small questions. Test your understanding. There is a company. So I think we had done a question also yesterday also on this, similar to this. This is a company, Jojo Limited is planning to list on Bombay Stock Exchange next year. As an auditor of this company, identify any one reason of increased audit risk due to listing of the company next year. Now it is slightly different. It asks you, it states that audit risk is higher, but it asks you to state any one probable reason that why audit risk in such a situation would be high. Yes. Yes, students. Why audit risk in such kind of situation could be high? Yes. So risk is high because the company is going to be listed, and there are chances that financial statements can be materially misstated. There are chances that financial statements can be materially misstated. Okay, so this is the one of the reasons of increased audit risk due to listing of the company. And another question is on going through, on perusing financial statements of this company. आपके सामने इसी कंपनी की बात हो रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आई हैं ऑडिट के लिए. It is observed by the auditor that current ratio has improved from 1.0 to 1.75 in current year. Identify what kind of risk assessment procedures are performed by the auditors. Yes, students. Current ratio आपको पता है students? You might have heard about current ratio. Yes, students. You know about current ratio? Probably you have passed your foundation exams, so you must have read in your accountancy, and even in class 12 also you must have read about it. Yes, students. So current ratio is current assets divided by current liabilities. Current ratio is current assets divided by current liabilities. सो कंपनी की लिस्टिंग हो रही है और करंट रेशियो सडनली इंप्रूव हो गया, जंप कर गया है. So again, what kind of risk assessment procedures auditor is employing? He is employing risk assessment procedures. He is employing risk assessment procedures. Sorry, he is employing analytical procedures under the overall risk assessment procedures. The question is asking what kind of risk assessment procedures he is employing.
So he is employing analytical procedures as risk assessment procedures. Okay. So obviously reason वही है कि there can be manipulation in current assets, and suddenly current as current ratio has improved to show a better picture. Okay. Yes. So clear, students, about risk assessment procedures. Now we will talk about internal control and its components. कि इंटरनल कंट्रोल का मीनिंग क्या है और उसके कंपोनेंट्स क्या है. स्टूडेंट्स, इसके बीच में एक और टॉपिक है मेटेरियलिटी का, बट दिस टॉपिक, सिंस दिस टॉपिक रिलेट्स टू SA 320, that is why we shall be doing it afterwards. So first we shall be doing internal control and its components, and then we shall be coming back to this topic, materiality. So for the time being, I am leaving this topic, materiality, and we are going to start a meaning of internal control and its components. Okay. So we will be doing this topic afterwards within this chapter. Yes. So students, we are at page number 3.24. We are at page number 3.24 of your module. So understanding the entity and its environment. So internal control के बारे में, उसकी definition के बारे में जानने से पहले students, we shall learn that why understanding the entity and its environment is important, and how it can be obtained, how, through which sources the auditor can obtain understanding of the entity, through which sources the auditor can obtain understanding of the company. हम बात तो स्टूडेंट्स बहुत कर रहे हैं कि कंपनी को अंडरस्टैंड करना चाहिए ऑडिटर को, लेकिन कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए? सिर्फ क्या कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस समझ के कंपनी अंडरस्टैंड हो जाएगी? नहीं. SA 35315 says that to understand a company, the auditor can access to following areas. Okay. Number one, relevant industry, regulatory and other external factors, including applicable financial reporting framework. So ये तो students हम समझ चुके हैं. I have also explained to you many times earlier also कि किस इंडस्ट्री में वो कंपनी काम कर रही है, कौन रेगुलेटर है, क्या उसका फ्रेमवर्क है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है. ये सब चीजें तो इंपॉर्टेंट है उसको कंपनी को अंडरस्टैंड करने के लिए, टू अंडरस्टैंड द कंपनी. सो वन फैक्टर इज relevant industry, regulatory and other external factors, including the applicable financial reporting framework. And number two is nature of the entity. So nature of entity में क्या क्या, what has to be seen by the auditor in nature of entity? Number one is its operations. That is the basic thing. क्या कंपनी क्या काम कर रही है, उसके बिना तो you can't do audit. You leave about audit, you can't prepare an audit plan. Okay. Its ownership and governance structures. Yes. Who are the main stakeholders in the company? Who are the owners of the company? By whom the company is owned? Okay. The types of investments that the entity is making and plans to make.
Okay, it might so happen that company has invested uh, some substantial sum of money in different companies, in shares of different companies, or in certain other investments. So what are those kind of investments which the company is making? So you have to study the policy of the company in making investments. Okay, the way the entity is structured and how it is financed. So whether the company is uh, highly leveraged or whether it is low leveraged, क्या कंपनी ने बैंकों से पैसा ज्यादा उठा रखा है, or whether the company has brought the funds from the promoters, or whether there are funds which have been infused by the public at large. Okay, so whether it is a public company, तो public की शेयर होल्डिंग है, it is dispersed all over the country. So these kind of things, so these also help one in understanding the company, in understanding the entity in a better way. Okay, clear students? So ये सेम ही इसकी स्टूडेंट्स जो हम what we have discussed, ये वही चीजें इसमें लिखी हुई हैं. So I am giving you a crux of the matter. The third point is the entity selection and application of accounting policies, including the reasons for changes thereto. So that is also important factor. कि how the entities selects its accounting policies, whether these are appropriate. So this also helps auditor in better understanding the company. And number fourth point is how the company identifies its business risks. What are the company's objectives? So अगर कंपनी में कोई स्टूडेंट सिस्टम नहीं है अपने खुद के बिजनेस रिस्क को आइडेंटिफाई करने का, तो उसमें मेटीरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस होने के ज्यादा हैं. So every company should have its own risk assessment process of assessing its business risk. सपोज कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, तो क्या कंपनी के यहाँ कोई इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस है जिससे वो असेस करते हैं कि हमारा बिजनेस रिस्क इंक्रीज हो गया या डिक्रीज हो गया? अगर कंपनी इस चीज को असेस नहीं करती तो दे माइट बी आउट ऑफ बिजनेस in some years. Okay, so the point is entities, objectives and strategies and those related business risks that may result in risk of material misstatement. Okay, number fifth is measurement and review of entities financial performance. now ये तो आपको स्टूडेंट्स कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, प्रीवियस ईयर फाइनेंशियल कैसे हैं, ये तो आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से भी देख सकते हैं. इसके अलावा इंडिपेंडेंट कंफर्मेशंस लाइक कंपनी के जो बजट फोरकास्ट हैं उनसे भी आपको कंपनी का पता चल सकता है कि कंपनी की डायरेक्शन क्या है. और इंडिपेंडेंट फोरकास्ट जैसी क्रेडिट एजेंसी रिपोर्ट्स, उनसे भी आपको पता चल सकता है. जो इंडिपेंडेंट क्रेडिट एजेंसीज होती हैं स्टूडेंट्स, जो एक्सटर्नल क्रेडिट एजेंसी, रेटिंग एजेंसीज जिनको हम बोलते हैं, these players are there in the market which provide credit rating to the company, to entity, giving keeping in view the overall scenario which is prevailing in that industry. Okay, so I am again repeating all the 5 points, so you have to remember their headings, and you have to understand what do these points convey. So one thing is obtain understanding about the industry
regulatory and other applicable financial reporting framework. Number two is understand the nature of entity, including its operations, nature of operations, its governance structure, and how it is financed. And number three is entity selection and application of accounting policies. Number four is entities, objectives, and strategies, including its business risks. And number five is measurement and review of entities' financial performance. So from these five areas, the auditor can get an understanding of the company, what the company is all about, what is its nature of business, who are persons behind the company, who are stakeholders in the company, what is the financial performance of the company, what are the business risks of the company. So these type of things he can gather by studying all these five areas. So why understanding the company is significant, that you know, because without understanding a company you cannot conduct the audit, you can't plan the audit. So understanding the company is the basic foremost requirement. So students, and you also have to remember that understanding the company is a continuous dynamic process. It is not again a closed process. ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कंपनी की अंडरस्टैंडिंग कर ली और कुछ और इंफॉर्मेशन आपके लाइट में आती है, देन यू वुड क्लोज योर आईज. नो, you would continuously update yourself, you would continuously update the information, you would continuously gather updates which provide fresh light, which throw fresher perspective on the company, which help you in better understanding the company. So now we come to meaning of internal control. Yes. So students, हम चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं कि कंपनी और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए सिस्टम which by which the company carries out its operations. Because without any system, no company can carry out its business properly. No company can carry out its business effectively or efficiently. So this is our understanding. Now, what is the definition of internal control? What is the technical definition of internal control? So students, I am writing for short internal control, IC. Okay. So what is the technical definition of internal control as per SA 315? As per SA 315, because all these topics are there in SA 315. So what is the technical definition of internal control as per SA 315? So SA 315 defines internal control. So students, ये definition भी आपको you have to remember. Because in many things, when you would be in a doubt, if you remember this definition, you can derive or many of the points relating to internal control if you properly learn this definition. So internal control may be defined as the process. It is a process
designed, implemented and maintained. Now students, these three words are important. स्टूडेंट्स, ये आपको ये डेफिनेशन, जो की डेफिनेशन है, ये याद करनी पड़ेंगी. इसके याद किए बिना आप पेपर में लिख नहीं पाएंगे, ना ही आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. So the internal control process may be defined as the process designed, implemented and maintained by the management. Now it talks about three things: designing, implementing and maintenance. So process is created by the management. It is the responsibility of the management. That is why we say it is designed by the management. Number two, it is implemented by the management. Implemented means that management is responsible for implementing it. That it is management's responsibility. Number three, maintained. Maintained means that it is kept in good condition. That management ensures that controls which they have designed and implemented are working. So you have to remember these three words. So anyway, any one of you can prepare an acronym, like you can prepare DIM to remember. तो इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन आते ही दिमाग में आना चाहिए DIM, टू रिमेंबर टू राइट, so that you do not forget these three words: design, implemented and maintained. By management and other personnel to provide reasonable assurance. So again, controls also provide reasonable assurance. Why controls provide reasonable assurance? Because no system is perfect. So that is why they provide only reasonable assurance. About the achievement of entities' objectives with regard to, now this definition talks about four things: with regard to reliability of financial reporting, effectiveness and efficiency of operations, safeguarding of assets and compliance with applicable laws and regulations. Now all the 4 points you have to remember, that internal controls deal with the objectives of an organization with regard to number one. What is number one? Reliability of financial reporting. That whatever information is there in the financial statements, in the reports, in the financial reports, it is reliable. Whatever system, whatever information is produced by the company, whatever financial information is produced by the entity, it is reliable. So the controls tend to ensure this. The controls ensure that financial information is reliable. Okay. Number two is effectiveness and efficiency of operations. That all the company's operations, its activities are carried out efficiently and effectively. Whatever is desired, it is obtained, and it is also obtained in an efficient manner. Okay. Number three is safeguarding of assets. Now controls are also designed at safeguarding of assets, like an entity's assets are not stolen. So what are controls designed in this regard? An entity's assets are protected from risks. Like a company is getting its stocks insured, it gets its complete building and plant and machinery insured. So this is an example of control. The company has devised a control that if something happens, if some unfortunate incident happens, if the company's interests are protected. So अगर इंश्योरेंस ही नहीं होगी तो स्टॉक सारा खत्म हो जाएगा. Company would have to bear losses. Okay.
and compliance with applicable laws and regulations. And controls also ensure that the company continues to be on the right side of law. It is not on the wrong side of the law. It continues to comply with all the regulations, like it is compliant with labor laws, it is compliant with direct tax laws, it is compliant with indirect tax laws. Okay. So these are the four things, students. So a control system is designed at these four things to achieve these four objectives. It is designed, implemented, and maintained by management to achieve these four objectives. Now, what are these four objectives? ये आपको स्टूडेंट्स याद रखने हैं, रिमेंबर करने हैं, और ये पूरी की पूरी डेफिनेशन जो इंटरनल कंट्रोल की है एज पर SA 315, दिस यू हैव टू रिमेंबर. तो क्या फोर ऑब्जेक्टिव्स हैं? मैं इनको स्टूडेंट्स आपको एक बार दोबारा बोल देता हूं, हम दोबारा इसको रिपीट कर लेते हैं. नंबर 1, reliability of entities financial reporting, that whatever information is produced by the entity, it is reliable. The controls of the entity work in that direction, कि जो कंपनी ने सिस्टम बनाया है वो उस ढंग से काम करता है कि जो कंपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस कर रही है इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज रिलायबल. ओके. नंबर 2 is efficiency and effectiveness of operations, that all the operations of the company are carried out effectively and efficiently. So whatever is desired by the management, that outcome is obtained. That would be effective, and efficient means it is done in a proper time without wastage, keeping in view consideration of costs. Number 3 is compliance with applicable laws and regulations, that company continues to comply with various laws applicable to it. Like I have given you the example, it is labor law compliant, it is complying with direct tax laws, indirect tax laws, okay, or any other laws which may be applicable to the company, like say laws relating to pollution if it is a manufacturing industry and producing some sort of effluents. Okay. And number 4 is safeguarding of assets. Number 4 is safeguarding of assets, that the company that the company's control systems are geared towards safeguarding its assets. All the assets, be it in the form of plant, machinery, be it in the form of building, be it in the form of stocks, these all the assets are safeguarded. So the company devises a system. It devises an in-house system also, that some small assets are not stolen, and it otherwise also develops a system to safeguard its assets, like say when it takes insurance policies for safeguarding its valuable assets. Clear, students? Now, benefits of understanding of internal control. Now, why the hell we are studying internal control? A question would arise in your mind. So, what are the benefits of studying internal control?
The benefits of studying internal control are that it helps in identifying potential misstatements, and it helps in determining the nature, timing and extent of further audit procedures. तो स्टूडेंट्स, हमने पहले भी समझा था कि अगर किसी कंपनी का कंट्रोल सिस्टम अच्छा है, इट इज एफिशिएंट, तो ऑडिटर को सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जो एक्चुअल चेकिंग प्रोसीजर्स हैं, वो उसका ही कैन बी कंफर्टेबल, ही उसका दायरा वो कम रख सकता है। लेकिन अगर किसी कंपनी का कंट्रोल सिस्टम इनएफिशिएंट है, इट मींस दैट he would have to increase his area of checking. He would not be able to place a reliance upon the control system of the company. Now this is one of the, these are some of the benefits of understanding internal control. That is why we are understanding meaning of internal control, we are learning about definition of internal control, because it helps auditor practically, it helps auditor in identifying potential misstatements. Clear, students? Is that clear? That why study of, you can say it that way, that this is why the study of internal control is important. These are the benefits of understanding internal control. So that is why the study of internal control becomes significant. Okay. Yes, guys. So students, we'll take a short break of 7 minutes here, and we'll come back after 5-7 minutes, guys. So break for 5 minutes.
Yes, welcome back, guys. So, students, we were doing about internal control, about the definition of internal control, and we have just understood that what is the meaning of internal control and why it is beneficial for the auditor to study internal control. So, before we proceed further, students, we have with us CA Shri Rajiv Sachdeva ji, Faculty Board of Studies. So he would also like to talk with you. So if you have any information to ask from him, you can ask. If you have any doubts, you can raise your doubts. So CA Rajiv Sachdeva ji. Yes, good morning, sir. And good morning, all of you students. Students, क्लासेस आपकी कैसी चल रही हैं? और आप कितना ऑडिट सीख रहे हैं? कितना ऑडिट सीख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीओएस स्टूडेंट्स जो क्लासेस होल्ड कर रहा है, जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं, उन क्लासेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑडिटिंग आप सीख रहे हो, ऑडिटिंग की क्लास आप अटेंड कर रहे हो, 2 चैप्टर्स हैव ऑलरेडी गॉन और 3rd चैप्टर आपका चल रहा है। तो आप, सिंस यू आर डूइंग ए प्रोफेशनल कोर्स, आपको अल्टीमेटली एक प्रोफेशनल बनना है। तो क्लासेस का ऑब्जेक्टिव, बीओएस का ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको प्रोफेशनली कंपिटेंट बनाना है। और प्रोफेशनली कंपिटेंट बनाने के लिए 2 ऑब्जेक्टिव्स आप ध्यान रखें। एज ए स्टूडेंट मैं बात कर रहा हूं आपसे, एज ए स्टूडेंट आप 2 ऑब्जेक्टिव ध्यान रखें। एक तो अपना नॉलेज बिल्डअप करें किसी भी सब्जेक्ट की। जैसे इफ आई एम टॉकिंग ऑफ ऑडिटिंग, तो ऑडिटिंग में आपको नॉलेज बिल्डअप करना है। ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट, ये इसमें कंसेप्चुअल लर्निंग बहुत ज्यादा है ऑडिटिंग में। इफ आई एम टॉकिंग ऑफ ऑडिटिंग, तो इसमें कंसेप्ट्स की लर्निंग बहुत ज्यादा है और इससे आपका नॉलेज बिल्डअप होने वाला है। तो आप नॉलेज बिल्डअप पे जोर दें। मैं बताऊंगा कैसे जोर देना है, वो मैं बताऊंगा। दिस इज वन थिंग। और दूसरा पार्ट है स्टूडेंट्स, इस क्लासेस को अटेंड करने का, आप ये दोनों ऑब्जेक्टिव दिमाग में रखेंगे अपने। मैं कभी अगले लेक्चर में आऊंगा तो क्वेश्चन भी पूछूंगा ये वाला। और दूसरा सेकंड ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को तैयार कैसे करें। अब 2 बातें हैं, वन इज नॉलेज बिल्डअप एंड सेकंड इज प्रेपरेशन फॉर एग्जामिनेशन। नॉलेज बिल्डअप, टुवर्ड्स नॉलेज बिल्डअप, आप जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल का की एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको रीड करें, स्टडी करें। और कंसेप्चुअल लर्निंग आपको कैसे डेवलप हो रही है? आपकी क्लासेस के साथ। जो सर आपको इतना नॉलेज का भंडार आपको दे रहे हैं, उससे आपकी नॉलेज बिल्डअप होगी। प्लस आप जो स्टडी मटेरियल की स्टडी, ये 2 सोर्सेज हैं आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट। और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप इन 2 पे यू बैंक अपॉन ऑन दीज 2 थिंग्स। एक तो आप स्टडी मटेरियल रोज पढ़ें और दूसरा आप क्लासेस को रिलीजियसली अटेंड करें। और जो स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड कर रहे हैं बहुत अच्छा है, और जो स्टूडेंट्स नहीं अटेंड कर रहे हैं, आपके जो दोस्त नहीं अटेंड कर रहे, आप उनको बोलो कि क्लासेस में आए, बिकॉज क्लासेस आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल। स्टूडेंट्स, आप बहुत अच्छा इससे गेन, नॉलेज बिल्डअप भी होगा आपका और मार्क्स में भी कन्वर्ट, अल्टीमेटली प्रेपरेशन फॉर एग्जामिनेशन, और फाइनली जो है मार्क्स में कन्वर्ट होना, वो भी आपका होगा। तो स्टूडेंट्स, आप ये 2 ऑब्जेक्टिव जो मैंने बताए हैं, इनको ध्यान में रखें। अब मैं अगर बात, कुछ जनरल बातें आपसे करूंगा ये सारी। एक बहुत बड़ा गोल्डन रूल है स्टडी करने का, बहुत बड़ा। आप थोड़ा नोटबुक और
पेन अपने लेकर बैठा करो जब भी आप लेक्चर अटेंड किया करो स्टूडेंट्स। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आप नोटबुक अपनी साथ रखो और अपना पेन रखो, सो दैट आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो टीचर आपको बता रहे हैं वो नोट नोट डाउन कर पाए। और आप एक गोल्डन रूल जनरली ये याद रखोगे, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। और इसी डायरेक्शन में, इसी को मीट आउट करने के लिए, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, मैं सभी स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करूंगा कि आप स्लो लर्निंग करें। जो भी रीड करें, जो भी समझें, उसको स्लोली रीड करें, स्लोली समझें। बिकॉज अगर आप स्लोली समझेंगे तो उसमें आपका डाइजेशन फास्ट होगा। आप जल्दी करेंगे तो डाइजेशन स्लो होएगा आपका। अब आपको चॉइस है आपकी, स्लो स्टडी करें, स्लोली लर्न करें। स्लो लर्निंग कैसे करनी है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो आज मैं फोकस करूंगा इसी बात पे, स्लो लर्निंग करें। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल, दो इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल आज मैं डिस्कस करूंगा आपसे स्टूडेंट्स। एक तो स्लो लर्निंग, और दूसरा लिंकेज बना के पढ़ें हमेशा। ऑलवेज स्टडी, ऑलवेज स्टडी फ्रॉम लिंकेज मेथड। लिंकेज मेथड क्या है वो भी मैं अभी आपको एग्जांपल से बताऊंगा स्टूडेंट्स। पहले मैं एड्रेस करूंगा कि स्लो स्टडी कैसे करनी है आपको। फर्स्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, आप जो कंसेप्ट है उसको अंडरस्टैंड करें, कंसेप्चुअल लर्निंग करें, अपना नॉलेज बिल्डअप करें उस कंसेप्ट को लेके। और शॉर्टकट्स मत बनाएं कि ये मेरे दिमाग में फटाफट एंटर हो जाए, क्योंकि शॉर्टकट जब आप करोगे तो वो फिर आप उसका जो होलिस्टिक व्यू पूरा उसका एंगल नहीं समझ पाओगे आप उसके बारे में। रीडिंग, स्लो लर्निंग से मेरा मतलब है एक बार रीडिंग, दो बार रीडिंग, तीन बार रीडिंग। आप 5 टाइम्स रीड कम से कम करें। जो सर ने आपको समझाया वो आप 5 बार कम से कम उसे रीड करें, मिनिमम 5 टाइम्स आफ्टर द लेक्चर इज ओवर। तो 5 टाइम्स रीड करने से क्या होगा स्टूडेंट्स, और एक दिन रीड करके नहीं आपने छोड़ना, उसको कम से कम 3 डेज तक रीड करें 5 टाइम्स। दिस इज कॉल्ड स्लो लर्निंग। अभी आप स्लो लर्निंग जब करेंगे 5 टाइम्स रीड, अभी आप क्या कर रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसा कर रहे होंगे, होपफुली कर रहे होंगे कि जो साथ साथ क्लासेस के साथ 2 आवर्स एक्स्ट्रा निकाल के पढ़ भी रहे होंगे या 3 आवर्स पढ़ रहे होंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हो, कहते हैं क्लास अटेंड होगी तो हमारा काम हो गया। वो ऐसा नहीं चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लेट अस बी वेरी श्योर अबाउट इट। क्योंकि अगर आपने क्लास अटेंड कर ली तो आपने समझा कि सारा कुछ हो गया, तो ऐसा ऐसा कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसा ही करते हैं कि क्लास अटेंड करते हैं, कहते हैं बस हो गया है, तो हमारे माइंड में एंटर हो गया, अब हम एग्जाम में जाकर लिखेंगे। तो क्लास से स्टूडेंट आपका नॉलेज बिल्डअप होएगा, कंसेप्चुअल आपकी क्लैरिटी होएगी, लेकिन ये एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन में फाइनल स्टेप्स नहीं है। फाइनल स्टेप है आपको उसको पॉलिश, उसको अपने माइंड में स्टेब्लिश करना और फिर उसकी पॉलिशिंग करते रहना, और उसको इस काबिल बनाना कि आप जब एग्जाम में जाओ तो उसे लिख पाओ। क्योंकि एग्जामिनर, आप फाइनल आउटपुट देखिए अगर, कि एग्जाम में तो जो आप लिख के आओगे एग्जामिनर वो रीड करेगा, उसके बेस पे आपको मार्क्स अलॉट करेगा। अब एक डेफिनेशन है, अगर डेफिनेशन, ऑडिटिंग की एबीसी क्या है, ऑडिटिंग की एबीसी क्या है, ऑडिटिंग की एबीसी है कि आप डेफिनेशंस जो हैं उनको 10 टाइम्स भी रीड करना पड़े तो कम में, और 5 डेज तक करो। आज मैं आपको टास्क दूंगा एक। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ऑडिट रिस्क सर ने आपको समझाया। क्या सभी स्टूडेंट्स मुझे ऑडिट रिस्क सुना सकते हैं कि ऑडिट रिस्क सर ऐसे होता है, ये होता है? मेरे ख्याल से एक दो स्टूडेंट को छोड़ के कोई नहीं, अभी किसी को मेमोराइज नहीं होगा, कोई बता नहीं पाएगा, कोई उसे वर्ड्स में जो स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ है कोई उसे बता नहीं पाएगा। कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मालूम है कि ऑडिट रिस्क क्या होता है? और वो, अब ऑडिट रिस्क क्या है, सर ने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया, मेरे ख्याल 15-20 मिनट 25 मिनट इसके ऊपर लगाया, ऑडिट रिस्क ही क्या होता है। अब आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई। अंडरस्टैंडिंग के बाद इसको 5 बार रीड करो। ऑडिट रिस्क, ऑडिट रिस्क क्या है, रिस्क है। अब रिस्क अंडरस्टैंड आपने कर लिया, रिस्क भी सर ने बताया, ऑडिट भी बताया। रिस्क दैट द ऑडिटर may give an inappropriate audit opinion when the financial statements are materially misstated. अब स्टूडेंट्स
इसको लिंकेज लिंकेज बना के करो। आप इस पे थोड़ा टाइम, इसमें थोड़ा ठहरो, इस पे थोड़ा टाइम डिवोट करो। ऐसा नहीं कि ये आपने इसको थोड़ा इस पे अपना थॉट प्रोसेस भी सारा डेवलप, सर आपको सारा थॉट प्रोसेस भी बताते हैं कैसे करना है। ऑडिट रिस्क, रिस्क तो है ही, तो ऑडिट रिस्क मींस रिस्क, तो ऑडिट रिस्क में ही लिखा हुआ है ये तो लिंकेज बन गई मेरी। ऑडिट रिस्क जब मैं लिखूंगा, डिफाइन करूंगा, मींस रिस्क, वो तो डेफिनेशन के अंदर ही लिखा हुआ है, तो लिंकेज मैंने बना ली। उधर से ऑडिट है, और ऑडिट का ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा है, ऑडिट का फाइनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ओपिनियन रिपोर्ट, अपनी ओपिनियन रिपोर्ट की फॉर्म में देना। तो अपनी ओपिनियन, एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन। तो अब आप स्कूटर अगर रोड पे चला रहे हो तो उसका रिस्क क्या है कि आप स्कूटर से गिर सकते हो, तो ये रिस्क है। अब मेरी ओपिनियन, सर ने समझाया था कि मेरी ओपिनियन गलत हो सकती है, ये मैं लिंकेज बना रहा हूं। रिस्क क्या है कि मेरी ओपिनियन गलत भी हो सकती है, तो यही वो लिखा हुआ है, तो ये मैंने लिंकेज बना ली ना ऐसे, कि अगर मैं ऑडिट कर रहा हूं तो ऑडिट करने में मेरा क्या रिस्क है। तो आप इस पे ऐसे लिंकेज बनाओ, और फिर उसे 5 टाइम्स रीड करो माइंड में। इस पे थोड़ा रुकोगे ना, तो आपके माइंड में चीजें धीरे धीरे स्टेब्लिश होनी शुरू हो जाएंगी। और चीजें जब स्टेब्लिश होनी शुरू हो जाएंगी, अब उसके बाद आप 5 टाइम्स रीड करोगे और 3 दिन तक रीड करोगे, तो आप लाइक एबीसी आपके दिमाग से चीजें निकलने लगेंगी माइंड से। और एबीसी जैसे आप अभी, मैं आप सभी स्टूडेंट्स को कहता हूँ एबीसी सुनाओ अपने, तो मेरे ख्याल से किसी पे कोई प्रेशर नहीं, एबीसीडी सभी बोल देंगे। लेकिन अगर मैं कहता हूँ इनहेरेंट रिस्क आप सुनाओ, कंट्रोल रिस्क, तो मेरे ख्याल से आपको एक वर्ड भी अभी नहीं बोल पाओगे आप, हालांकि आपने समझ लिया, सारा कुछ कर लिया। तो इसलिए स्टूडेंट्स, आफ्टर द क्लास इज ओवर, आप अपने स्टडी मटेरियल ओपन कीजिए, जो कंसेप्ट सर ने समझाए हैं उनको रीड करिए 5 टाइम्स तक। दिस इज कॉल्ड स्लो लर्निंग। आप स्लोली स्लोली करें, आराम से करें। और फिर हो सके तो उस डेफिनेशन पार्ट की भी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ, अभी क्वेश्चंस पे नहीं आ रहा मैं, तो उस डेफिनेशन को आप फिर लिख के भी देख लो एक बार, और फिर आप देखो कि क्या मैं अब बोल पा रहा हूँ वो डेफिनेशन। आप एबीसी की तरह जब बोलना शुरू हो जाएंगे तो मैं मानूंगा कि डेफिनेशन आपकी अब ये आप आपकी एक बैकअप में आ गई है। इसे मैं बैकअप बोलता हूँ, कि आपका बैकअप धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। तो बहुत बड़ी दो बातें, गोल्डन रूल्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो स्लो लर्निंग करें, 5 टाइम्स रीड करें फॉर 3 डेज। जो जो भी सर आपको कंसेप्ट बताते हैं उनको समझें पहले। पहला स्टेप है समझना। फिर आप स्टडी मॉड्यूल खोल के उसको 5 बार रीड करोगे, ये सेकंड स्टेप आपका हो जाएगा, और फिर उसे 3 दिन तक करना है। तो ये स्लो लर्निंग और लिंकेज मैंने आपको समझाई है कैसे बनानी है। आगे आगे और भी चीजें आएंगी तो मैं आपको समझाऊंगा साथ में, जैसे ऑडिट रिस्क। आज आप ऑडिट रिस्क तो घर जाके आफ्टर द क्लास इज ओवर इसको तो पक्का करके आइए। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊंगा तो आपसे ऑडिट रिस्क तो सुनूंगा ही सुनूंगा। तो कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं, आप क्वेरी पे लिख सकते हो, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऑडिट रिस्क की डेफिनेशन जैसे मैंने बोला तो आप अपने दिमाग में रिकॉल कर पाए थे? ऑनेस्टली आपको बताना है। तो और कितने स्टूडेंट्स हैं जो अभी उनके माइंड में नहीं है? मेरे हिसाब से 50% से ऊपर, 60-70% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो जिनके माइंड में तो समझ तो होती है, लेकिन वर्ड्स में उसको नहीं पिरो पाते। तो वर्ड्स में आप एक्सप्रेस जब तक नहीं कर पाओगे तब तक आप एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। तो दो बातें मैं आपको आज समझा रहा हूँ स्टूडेंट्स, एक तो नॉलेज बिल्डअप, और दूसरा एग्जाम के लिए तैयारी। तो एग्जाम की तैयारी और नॉलेज बिल्डअप आपका धीरे धीरे हो रहा है ऑडिटिंग के अंदर। और एग्जाम के लिए प्रेपरेशन, जो मैंने आपको दो बातें बताई हैं, एक तो आप स्लो लर्निंग करो, और दूसरी बताइए लिंकेज मेथड। हर चीज लिंकेज से चलो, उसके ऊपर थोड़ा थॉट दो, एक को दूसरे से लिंक। और भी सिखाऊंगा आपको लिंकेज मेथड, टाइम की पॉसिबिलिटी तो होती है, सर ने आगे क्लास भी लेनी। सर तो थोड़ा आप सा इंग्लिश लिंकेज, में बोल देना। ओके सॉरी सर। ओके, आप बता दो सर जो मैंने बोला, कोई नो प्रॉब्लम। एक Now, sir, whatever sir has has spoken about in Hindi, so I will translate it in into English. So, sir is harping upon two things. One is slow learning, and another is linkage. So, whatever you understand by attending the class, you should try to assimilate those things in your mind,
you should try to establish those things in your mind. And number two is linkage, that you have to link one thing with another. Like students, like today we were doing risk assessment procedures. So I tried to link risk assessment procedures with audit plan. So I told you that you had read in chapter 2 that audit plan includes plan description of risk assessment procedures. So that was included in plan. Now we are talking about performance of risk assessment procedures in this chapter number 3. So this is the way where you should link. And I am also trying to uh, give you examples, and I am also trying to link wherever possible, wherever it comes to my mind. I also try to link it with other concepts. Yes, students, or extending this further, how you should learn slowly. 5 times reading. 5 times reading is the best methodology. Whatever sir explains you and whatever is written in the study material about definition part. First, I am focusing on definition part only. And whatever definitions are there, this is called the ABC of auditing. And at intermediate level, so many questions are there where definition-based questions are there that are asked in the examination also, be it MCQs, be it correct, incorrect sort of questions. So definition at intermediate level plays a very big role. It is called ABC of auditing. And 5 times reading is the best methodology. So many definitions. Till now you have historical information, prospective financial information, and auditing, definition of auditing itself, and risk assessment procedure, inherent risk, control risk, audit risk, detection risk. So yes, these all definitions you have already, sir has already explained to you. तो स्टूडेंट्स, आप दो जो रूल्स मैंने गोल्डन रूल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं, एक तो स्लो मेथड, आप स्लोली स्टडी करें, आप पेशेंस रख के स्टडी करें, जल्दबाजी ना करें, दूसरे इन अदर वर्ड्स, क्योंकि बिकॉज जल्दी आप करोगे तो फिर आपको डाइजेशन आपका नहीं होगा, आप उसे माइंड में अपने स्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ स्लोली करो, क्योंकि बिकॉज ये एक स्लो मेथड ही होता है स्टडी को करना। और जो लोग तेज करते हैं बहुत ज्यादा, वो फिर उनका डाइजेशन कम होता है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन खत्म हो जाता है उसमें। तो एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि आप उसको स्लोली करो। और लिंकेज मेथड से क्या होगा कि आप कम स्लो भी कर रहे होंगे तो उसका आउटपुट आपको ज्यादा मिलने वाला है। तो ये कुछ बातें, दो बातें, ज्यादा नहीं बताऊंगा, इन पे आप पहले इंप्लीमेंट। एंड द बिगेस्ट थिंग स्टूडेंट्स, बिगेस्ट थिंग, कि वट एवर टीचर्स आर टेलिंग यू, आप उसका इंप्लीमेंटेशन भी करें, उसको इंप्लीमेंट। अब मैं आपको समझा रहा हूं, आप इसको इधर से सुन के इधर से निकाल दोगे तो उसमें फिर आपका इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो इंप्लीमेंटेशन भी आज से ही शुरू करो पढ़ना। और मैं अपने मोबाइल नंबर भी शेयर कर रहा हूँ, लैंडलाइन नंबर भी शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर कोई भी इसके बाद भी, इतना सब एक्सप्लेन करने के बाद भी, अगर आपको दिक्कत आती है पढ़ने में, कोई और चैलेंज आप फील कर रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम्स हैं, या कोई कंसेप्ट आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, हालांकि सर इतनी डिटेल में चले जाते हैं विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल, इतनी भी डिटेल में आपको समझाते हैं, कई बार तो बहुत डिटेल में सर आपको समझाते हैं। मेरे ख्याल से उसमें तो आपको डाउट का तो कोई आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं रह जाता मेरे ख्याल से, इतना एक्सप्लेन कर देते हैं सर, और बहुत डीप में जाके सर पढ़ाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद तो कोई डाउट का तो मतलब नॉट इवन ए सिंगल डाउट आपके माइंड में नहीं रहना। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो मैं तो कहता हूँ इसके बाद भी आपको पढ़ने में परेशानी आ रही है, और तरह की कोई परेशानी है, तो आप बोर्ड ऑफ स्टडीज में मुझे कॉल कर सकते हैं ऑडिटिंग के लिए। और मेरा लैंडलाइन नंबर है स्टूडेंट्स 01203045 मोबाइल नंबर्स भी स्टूडेंट्स आप मेरे नोट कर सकते हैं, 9718036119। और कभी भी आपको मोबाइल नंबर मेरे पूछने, आप सर से पूछ सकते हैं, सर आपको उसी समय मेरा मोबाइल शेयर कर देंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 9466
892988, ये मेरा दूसरा मोबाइल नंबर है स्टूडेंट्स। आप बोर्ड ऑफ स्टडीज आपकी 100% हैंड होल्डिंग करता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, हम आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। और स्टूडेंट्स, आप टीचर्स टीचर को, अगर आप, जो टीचर बोल रहा है, जो टीचर कह रहा है, अगर आप उसे रिलीजियसली फॉलो करोगे, स्टडी मटेरियल को पढ़ोगे, तो मार्क्स विल फॉलो। मैं तो कहता हूँ आप ऐसी तैयारी करनी चाहिए स्टूडेंट्स को। मैं हर एक स्टूडेंट को यही समझाता हूँ, जो आते भी हैं हमारे पास बोर्ड ऑफ स्टडीज में स्टूडेंट्स, तो मैं तो उनको यही समझाता हूँ कि आप तैयारी इस लेवल पे पहुंचा दो कि मार्क्स आपके पीछे भागने शुरू हो जाए। आप मार्क्स के पीछे मत भागो, मार्क्स आपके पीछे भागे। ऐसी तैयारी हमें करनी है स्टूडेंट्स कि मार्क्स आपके पीछे। और मैं तैयारी ऐसे नहीं, खाली बोल नहीं रहा हूँ कि तैयारी ऐसी, मैं आपको समझा भी रहा हूँ उस डायरेक्शन के अंदर कि आप ये मेथोडोलॉजी से, जो आप एक बार, ये टाइम टेस्टेड मेथोडोलॉजीज हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने समझाई हैं ऑलरेडी इन पास्ट, और वो मार्क्स में भी कन्वर्ट हुई हैं। स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 70 75 60 प्लस मार्क्स, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो। और स्टूडेंट्स, आप रिलीजियसली पढ़ें, अच्छे तरीके से पढ़ें, और खुश होके पढ़ें। अनदर पॉइंट इज कि आप उसे बर्डन समझ के ना पढ़ें, खुश होके पढ़ें। उससे भी आउटपुट आपकी काफी डबल ट्रिपल होती है। और स्टूडेंट्स, जहां तक क्वेरीज का सवाल है, अगर मैं आपको फिर दोबारा से ये बोल रहा हूँ कि अगर आपकी कोई क्वेरी रह भी जाती है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पे मुझे कॉल करें, और आप लैंडलाइन पे मुझे कॉल कर सकते हैं, और किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। अगर उस समय मैं आंसर नहीं भी कर पाऊंगा, तो मैं कॉल बैक करता हूँ, हर स्टूडेंट को कॉल बैक करता हूँ। तो और कोई स्टूडेंट की क्वेरी है आशीष सर? सर एज सच तो कोई क्वेरी नहीं है इसमें। प्रियंका पांडे इज आस्किंग हम्म। गोइंग ऑफिस हाउ टू मैनेज स्टडीज, हाउ टू मेक नोट्स, somebody is देखो, asking। नोट्स पे अभी फोकस ज्यादा ना करो, मैं आपको यही बता रहा हूँ। अभी मैंने आपको बोला स्लो मेथड फॉलो करो। अभी आप नोट्स के, नोट्स शॉर्टकट है। पहले आप सब्जेक्ट में क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, ये नॉलेज बिल्डअप, ये चीजें करो, बिकॉज प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है। प्रोफेशन आपको अल्टीमेटली अपने क्लाइंट को एडवाइस करनी है, तो आपको इन डेप्थ नॉलेज उस सब्जेक्ट की होनी बहुत जरूरी है। डोंट गो फॉर शॉर्टकट्स। आप नोट्स अगर बना लोगे तो खाली नोट्स ही पढ़ते जाओगे, स्टडी मटेरियल पे कभी नहीं आओगे। सर तो इस बात इसलिए, को भी थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दें। कई स्टूडेंट्स जो है वो नोट्स पे ज्यादा एम्फेसिस करते हैं नो नो नो, और नॉट एट ऑल। मैं वो बिल्कुल स्पून भी नोट्स फीडिंग के, चाहते हैं। नोट्स आप जब सेकंड रीडिंग, सेकंड टाइम आप जब करोगे, पहली बार तो आप स्टडी मटेरियल में से ही कर लो। क्वेश्चंस भी, डेफिनेशन भी, एवरीथिंग, एक एक लाइन स्टडी की बहुत अच्छे से करो। और जब आप सेकंड रिवीजन शुरू करोगे, आफ्टर से 2 3 मंथ्स, 2 मंथ्स आफ्टर से, तो उस समय फिर जब आप दूसरी बार एक ही चैप्टर पर आओ, अब पहला चैप्टर आपने कर लिया, दूसरा चैप्टर कर लिया, अब आप जब पहला चैप्टर शुरू करोगे दोबारा से, आपको साइमल्टेनियसली करना पड़ेगा। ये बता रहा हूं, जो सर करा रहे हैं जो चैप्टर, वो तो करना ही करना है, प्लस चैप्टर वन को रिवाइज करना भी शुरू करना है। ये 15 दिन के बाद आप ऐसा काम शुरू कर सकते हो, 10 दिन के बाद, जब भी आपको आपको कन्वीनियंट है। एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स मैं कहता हूँ स्टूडेंट्स को एक सब्जेक्ट को डिवोट करने बहुत जरूर, खासकर ऑडिटिंग को। बिकॉज ऑडिटिंग एग्जामिनेशन एंगल से स्टूडेंट्स को चैलेंज देता ही देता है। तो इसलिए 3 4 आवर्स ऑडिटिंग में पढ़ना बहुत जरूरी है, हर रोज क्लास के अलावा कह रहा हूँ। ठीक है ना? और नोट्स जब आप सेकंड टाइम उस चैप्टर पे आओ, तो वो भी आप उसे 5 टाइम्स 10 टाइम्स रीड करके फिर अपनी लैंग्वेज में लिखें। वो नोट्स आपको एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। और फिर लैंग्वेज भी एक बार श्योर रहे, आप लैंग्वेज कमांडिंग होनी चाहिए। आपकी 50 60% लैंग्वेज तो स्टडी मटेरियल की होनी ही चाहिए, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली बनती है। मैं ये नहीं कह रहा आप उसे लर्न करो या कुछ ऐसा करो, आपने उस पर प्रैक्टिस करनी है बस। 5 to 10 टाइम्स रीडिंग, जैसे मैं आपको कर रहा हूँ, 3 डेज तक करो, फिर जब आप रिवाइज करोगे तो भी रीडिंग करो। और लास्ट प्रोसेस होता है आपका नोट्स का। नोट्स में जल्दी और किसी के नोट्स मत पढ़ो कभी भी, ये ध्यान रखना। नोट्स आप अपने ही फॉर्म करो, अपनी ही लैंग्वेज में लिखो, फिर आपके मार्क्स तो आपके पीछे भागने वाले हैं अगर आप ये प्रोसेस करोगे तो। यस, एनी अदर क्वेरीज देयर जय सर? पटेल इज आस्किंग हाउ टू मैनेज आर्टिकलशिप विद स्टडी। अभी आर्टिकलशिप कौन सी उनकी शुरू शुरू हो गई है? ही इज अभी तो सेइंग मे दैट आई 20, एम डूइंग आर्टिकलशिप। तो आर्टिकलशिप तो अभी शुरू होएगी नहीं। ही इज राइटिंग आई एम डूइंग आर्टिकलशिप अच्छा नाउ। ओके, ये ओल्ड ओल्ड स्कीम में रजिस्टर कराया होगा इसने। हो सकता है।
तो कोई बात नहीं, अगर आर्टिकलशिप भी आपकी चल रही है तो भी आपको मैनेज तो करना ही है। आप अगर 10 to 6 ऑफिस जा रहे हैं या 10 to 5 जा रहे हैं, तो मॉर्निंग आवर्स आप सुबह 4 से लेकर 10 तक पढ़ो, और फिर 6 से लेकर 11 बजे तक पढ़ो। तो ऐसे आपको मैनेज करना पड़ेगा, बिकॉज क्योंकि टाइम की पॉसिबिलिटी तो होती है सी स्टूडेंट्स के पास। ऑफिस में भी आप जब लंच टाइम हो तो उसको स्टडी, बिकॉज आपके पास जो आपके माइंड में हमेशा स्टडी 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 और खुश होके होनी चाहिए। ये कोई आपके दिमाग पे बोझ नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूं तो बड़ा बोझ हो गया ग्रेड। खुश हो गए अगर आप हैप्पीली करोगे स्टूडेंट्स ये सारा काम, तो उसके रिजल्ट्स भी आपको 4 गुना मिलने वाले हैं, ये ध्यान रखना। और अगर आप बोझ समझ के तो पढ़ना पड़ रहा है मुझे, तो फिर उसके रिजल्ट्स भी कम हो जाते हैं। तो जय होपफुली आप, और अगर आपको फिर भी डाउट रह जाए तो आप मेरे से फोन पे बात कर लेना, मैंने अपने दोनों नंबर शेयर कर दिए। यस, एनी अदर क्वेरी देयर सर? Rahul is asking, does writing affect marks in auditing? डेफिनेटली डेफिनेटली राहुल, यू आर वेरी राइट। राइटिंग जो स्किल्स है वो आपकी धीरे धीरे डेवलप होती है, मैं अब यही समझा रहा था। ये स्किल आपकी डेवलप होने वाली है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप मेरी, आप जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है आपने उसको फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। स्ट्रेटेजी क्या बताई है आपने? स्लोली पढ़ना है, और दूसरा आपने लिंकेज मेथड से पढ़ना है। और फिर भी अगर आप शुरू करो, और नेक्स्ट वीक में भी मैं ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता आने वाला हूँ आपके सर के साथ, और आपको तैयारी तो मैं आपकी करवा के शुरू शुरू करवा के दम लूंगा। आप ये देखो कि तैयारी तो हमने करनी करनी है। एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी, नॉलेज बिल्डअप भी करना है, और तैयारी एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन के साथ तैयारी भी करनी है, दोनों काम हमने करने हैं। तो कौन पूछ रहा था सर, ये राहुल? This was Rahul. हाँ राहुल, तो आप ये इस जो मैंने मेथोडोलॉजी बताई है उस पर वर्क शुरू करो, आज से ही करो। और अगर फिर भी आपको डाउट है तो एक बार बीच में फोन पे बात कर लेना मेरे से, और नेक्स्ट वीक तो मैं आऊंगा ही, और इसको एलेबोरेट करेंगे। आप शुरू करो पहले, देखो इम्प्लीमेंटेशन मैंने बहुत बड़ा स्टेप कहा था, और इम्प्लीमेंटेशन स्टूडेंट मार यही खा जाता है। सुन तो लेते हैं सबकी बातें, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन शुरू ही नहीं करते, उसको उस पर काम करना पड़ता है एक्चुअली। यस, यस सर, इज देयर एनी अदर क्वेरी? नहीं सर, और तो कोई खास नहीं है अभी तो। ठीक है सर। तो हम अपनी जर्नी जो है ये वाली कंटिन्यू करेंगे, स्टूडेंट्स की जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रेपरेशन है इसे भी साथ लेके चलेंगे। और आई विल कीप ऑन कमिंग एटलीस्ट फॉर 15-20 मिनट सर। और Okay, sir. स्टूडेंट्स, Welcome anytime. You can come थैंक यू to सर, your थैंक यू सो class. मच। थैंक यू, यू कैन कंटिन्यू विद योर लेक्चर सर। Okay. इफ देयर इज एनी अदर क्वेरी आई विल लव टू आंसर, अदरवाइज यू कैन कंटिन्यू सर। Okay. इज देयर एनी इशू सर? No, sir. There is no question till now. ओके सर, ओके। So yes, students, we एक we और are पॉइंट सर रह गया लास्ट मेरा, मैं yes. एक बार एक पॉइंट और रह गया सर, मैं एक्चुअली एड्रेस करना चाह रहा था। यस। Yes, sir. You can speak. स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट दिस इज अबाउट क्वेरीज ओनली। क्वेरीज के बारे में हालांकि मैंने बता दिया है, लेकिन जो क्वेरीज हैं आपकी क्वेश्चंस हैं वो, देखो जब आप लर्न कर रहे हो, जब आप चीजों को लर्न कर रहे हो, जब आपको सर फुल फॉर्म में आके समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बीच में क्वेरी मत पोज किया करो। ये मैं हमेशा हर स्टूडेंट को ये बोलता हूं जो मेरे पास भी आता है, और वैसे भी जिनके फोन भी आते हैं मेरे पास, और लेक्चर के दौरान भी मैं ये बात बोलता हूँ, हमेशा स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि टॉपिक जब चल रहा है तो बीच में क्वेरी मत किया करो। जब एक दो टॉपिक्स खत्म हो जाएं, उससे रिलेटेड सारी बातें, जब सारी बातें कंप्लीट हो जाएंगी, तो उसके बाद ही आप क्वेरी को अपनी सर से पूछा करो। बीच में क्वेश्चन करोगे, अगर भी टॉपिक बीच में चल रहा है तो, क्योंकि बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट बनी नहीं है, तो हो सकता है वो भी जो टॉपिक अभी लेफ्ट लेफ्ट आउट टॉपिक है उसमें वो बात आपकी आंसर्ड होनी हो अभी। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करके क्वेरी पूछा करो, जल्दबाजी ना करा करो। आफ्टर द लेक्चर इज लेक्चर के लास्ट 15-20 मिनट्स के अंदर पूछो, या टॉपिक खत्म होने पे पूछो। तो यही बोलना था सर मैंने। थैंक यू सर। Okay, sir. थैंक यू।
Yes, students, we had understood that what are the benefits of understanding internal control. Now we would understand about the limitations of internal control. So what are the limitations of internal control? We would try to understand that. So students, wait for a minute. Yes, Manish. हाँ, ये देखना पेज शेयर हो रहा है क्या? बट ये स्क्रॉल नहीं हो रहा आगे. हाउ इज दैट हैपनिंग? यस, देयर इज सम प्रॉब्लम. एक मिनट. नो, स्टिल सेम प्रॉब्लम. मूव ही नहीं हो रहा. इट इज स्टक अप. हाँ, हो गया अब, ठीक है. यस, सो लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल. So students, we had learned that no system is perfect. So similarly, internal control system is not perfect. It is because of the limitations of internal control. Now, what are those limitations? Like it can also only provide a reasonable assurance. It cannot provide a perfect guarantee, because any system devised by management, it is not perfect. Okay, so there would always be possibility of likelihood of system not being followed, of system not being adhered to. Okay, number two is human judgment in decision making. Human judgment in decision making. Say the management devised a control keeping in view a certain objective, but the people who were responsible for carrying out those directives, they understood it wrongly. So human judgment is involved. Human errors can be involved, and besides, there can also be errors in the designs of control themselves. So human judgments in decision making, lack of understanding for the purpose, this is also related to the same point. Second point, which we had discussed pertaining to human judgment in decision making. Number four, collusion among people. Say 3-4 persons who are responsible for implementing a control, they might collude. They may join hands together. Okay, and for committing some fraud, and thereby they can bypass a control, thereby they can circumvent a control. So collusion, because any control system, students, you have to remember, is generally based upon segregation of duties. That these kind of responsibilities would be performed by Mr. X, these would be again verified by Mr. Y, and a final approval will be given by Mr. C. So if A, B, C, or X, Y, or Z, all three persons collude together, they can bypass the control. So therefore also we say that control system is not perfect. So
it is because of the limitations of internal control. So these are the factors which we are studying, giving rise to the limitations of internal control. Okay. Judgments by management. So even at the time of designing controls, students, there are judgments involved on the part of the management. So like the management has designed a certain control, keeping in view mind, keeping in its mind certain objectives, certain judgments. But these judgments may be misplaced. These judgments may turn out to be inappropriate. So obviously the desired outcome would not be achieved. So that is why control system is not perfect. That is why limitations of internal controls arise. Okay. And next is limitation in case of small entities. Limitations in case of small entities. So students, in small organizations, like in small companies, or in case of companies where control system is not very well structured, it is not very well formalized, or there are 3-4 persons managing the organization. So in such cases, uh, that one person or 2-3 persons, they are doing all the things. Okay. One person he is also responsible for purchases, he is also responsible for sales, and he is also responsible for banking. So it has got its pros and cons both. It has got its advantages and disadvantages both. क्योंकि एक ही आदमी के हाथ में या कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ करना है, तो we can say that there is more oversight. They can exercise more oversight also. But on the other way, this can also occur in a different way. That if one person is responsible for doing all the things, or few persons are responsible for doing all the things, they would they are in a position to override the controls. They are in a position to bypass the controls. क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है, वही हर एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं. So these type of limitations arise in case of small entities. Okay, so these are limitations of internal control, and that is why students, as Rajiv sir was telling you, you have to link it with other things. Now, since there are limitations in internal control, tell me what arises due to this. We have learned that control system is not perfect. There can be human errors. There can be inappropriate judgments by management. There can be collusion by people, collusion by employees. There can be lack of understanding. These are all the factors which make a control system not completely perfect. So these are the limitations of internal control. So what do these limitations of internal control give effect to? इससे final effect क्या आता है students? In one word. Or what is the thing you can relate these limitations of internal control to? Yes, Rahul Sharma, you are correct. Control risk. So these all things give rise to control risk. Now, what was the definition of control risk? Possibility of controls not operating effectively. Possibility of controls not operating effectively. Okay, possibility of controls not being able to prevent
misstatements or detect and correct material misstatements in the financial statements. Okay. So clear, guys. So these are the limitations of internal controls. So students, once more I am sharing with you Rajiv sir's number. I am writing it on the board. These numbers are 97180361119, 94667, 89298. So if there are any doubts, if there are any queries, you can call him and share with him. Any student, any one of you whose doubts are not clear due to paucity of time here or due to whatever reason, he or she can call Sir C. Rajiv Sachdeva and you can talk to him. So this is a facility, students, provided to you, but I would request you not to misuse the facility, raise genuine concerns, ask queries, your genuine doubts. Rahul, it is not allowed to share my phone numbers. It is not allowed. It is not allowed. So if in case of any doubts, you can call CA Rajiv Sachdeva sir at these numbers and you can clear your doubts. Okay. सो अभी स्टूडेंट्स आपकी क्वेरीज ले लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा ही बचा है बिकॉज वी हैड ए फ्रूटफुल डिस्कशन विद राजीव सर. सो आपकी क्वेरीज, सो विल टेक क्वेरीज ऑफ टुडे सेशन. यस, अशोक खारेयाल, यू आर सेइंग व्हाट आर ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क. यस अशोक, ऑडिटर्स बिजनेस रिस्क का, ऑडिटर भी तो एक अपना प्रोफेशन कैरी कर रहा है, या आप इसको एक जनरल लैंग्वेज में कहें तो उसका प्रोफेशन या अपना बिजनेस कैरी कर रहा है. तो अगर कोई उसके बिजनेस में नुकसान होता है तो वो उसका बिजनेस रिस्क है. तो ऑडिट रिस्क जब आपने पढ़ा था, व्हेन यू स्टडीड ऑडिट रिस्क, तो सो वी अंडरस्टूड that any loss in business of the auditor does not fall in the definition of audit risk. वो चीज ऑडिट रिस्क नहीं है. क्लियर अशोक. सो अगर ऑडिटर की क्लाइंटेज पे असर पड़ता है या उसके कुछ क्लाइंट्स, some clients go out or he gets entangled in some legal matters, then it does not fall in the meaning of audit risk. These things fall in the meaning of auditor's business risk. वो उसका अपना बिजनेस रिस्क है, वो अपना काम कर रहा है, ये उसका रिस्क है, लेकिन ऑडिट रिस्क से इसका कोई मतलब नहीं है. So auditor's business risk is different from audit risk. You have to understand this. Okay. Yes, Pooja Gupta, you are asking what is not included in audit risk.
So again, these are the things which I have just explained. These are the things which are not included in audit risk. Auditors' business risk, like loss of clients, loss of goodwill, litigation matters, these in which he may be involved due to expressing inappropriate opinion, these are not part of audit risk. These are not included in audit risk. These are part of auditor's business risk. Okay. Yes. Nafia Sheikh, you are asking likelihood, meaning, yes, Nafia, likelihood means possibility of occurrence. That likelihood means likelihood of, like we use it in terms like likelihood of happening. What is the chance that it may happen? Like, what is the likelihood that it might rain tomorrow? So probability, chance. Yes, Ankur Patel, risk assessment procedures are definitely a part of audit procedures. Risk assessment procedures are definitely a part of audit procedures. Yes, Devender Singh, what is meant of variant? Variant means a type. किसी चीज की different form is known as variant. Yes, Ashok, please explain pervasively. Pervasively means which is present at many places, which is present everywhere, which is not confined to one thing. Like अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई मिस स्टेटमेंट है तो उसका इफेक्ट कई जगह पड़ रहा है, कई जगह पड़ रहा है ना, खाली सेल्स में नहीं पड़ रहा, खाली सेल्स में भी पड़ रहा है, प्रॉफिट्स में भी पड़ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट पे भी पड़ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल्स पे भी पड़ रहा है, सब कुछ डिस्टॉर्टेड है. दैट इज परवेसिव. Yes, inquiry of management within the entity. Yes, Vishali, आपकी क्वेरी तो ऑलरेडी हमने बता दिया पहले ही कि इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट जब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स कर रहे थे कि इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट मींस दैट द ऑडिटर वुड इंक्वायर फ्रॉम पर्संस विद इन द कंपनी. This we mean by inquiry of management within the entity, of those persons who are responsible for governing the company, of those persons who are responsible for managing the show. Okay. Difference between observation and inspection, I have already explained, Gunjan Kumar. Again, inspection means to see something or to examine some physical asset. देखना, से आप कोई पेपर पढ़ रहे हैं, you are inspecting, or you are visiting some place, you are inspecting. Observing means seeing some process. अगर आप किसी कंपनी का कोई प्रोसेस देख रहे हैं, कोई आदमी कैसे कर रहा है कुछ काम, तो दैट इज ऑब्जर्वेशन. यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग हैपनिंग. ओके. Yes, Gunjan Kumar, you are asking inherent or internal mean same or different? Yes, you can say they are sort of similar words.
but while writing you have to use the word inherent. Inherent is more proper, which describes you. Say Gunjan Kumar, you have to understand these things, that these key terms you cannot change. These key terms you cannot change. Yes, Rahul Sharma, what are special purpose vehicles? Yes, special purpose vehicle means uh, a company or an entity formed with a special purpose. ओके किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए कोई स्पेशल एंटिटी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, तो दैट मीन्स स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसका मीनिंग ये है कि ये कंपनी सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को बनाने के लिए क्रिएट की गई है। जैसे कि कोई कंपनी एक सब्सिडरी बना लेती है और उसका किसी प्रोजेक्ट को उसका काम किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना है, उसके बाद दैट कंपनी मे बी क्लोज्ड। सो इट इज ए स्पेशल purpose vehicle to achieve that desired objective. Yes, Priyanka Pandey, while conducting audit procedure and organization's transaction and disclosure is favorable, but credit rating is inverse, then how to express an opinion? Yes, good question, Priyanka. अगर किसी कंपनी के ऑडिट प्रोसीजर करते हुए आपको कुछ गलत नहीं मिला, लेकिन उसकी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी खराब है, क्रेडिट रेटिंग खराब है, सॉरी, क्रेडिट रेटिंग खराब है, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने दी है, दिस इज व्हाट प्रियंका इज ट्राइंग टू आस्क. सो द ऑडिटर would try to find out why it is so. Rather, it would help him in identifying risk of material misstatement, that I have not found something wrong, that all disclosures are proper, या जितनी मैंने चेकिंग की है वो सब फेवरेबल है, लेकिन क्रेडिट रेटिंग की जो एजेंसी है दैट इज अनफेवरेबल. सो इधर there might be something lacking in my procedures. So it would help him in digging out those things, in finding out those things. Gunjan Kumar, all definitions of audit are not be remembered. Then what? गुंजन, क्या आप पूछना चाह रहे हैं कि अगर ऑडिट की डेफिनेशन सभी नहीं रिमेंबर कर सके तो क्या? तो क्या एग्जाम में नंबर नहीं आएंगे? ऑडिट की डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है, आपको रिमेंबर करनी पड़ेंगी. Yes, Jay Patel, you had asked ki answers given back in module is enough for exams. Yes, these are enough for exams. In exams, Jay, even in descriptive type questions, the questions carry only 3 or 4 marks. So how much you can write? And the questions are very specific. So if you can write 1 or 2 paras correctly with proper reasoning, that is enough. कोई आपकी लेंथ देख के उसमें मार्क्स नहीं दिए जाते हैं स्टूडेंट्स. जो पूछा गया है, अगर वो रेलिवेंट पॉइंट्स इफ यू हैव रिटन, यू वुड गेट फुल क्रेडिट. और अगर आपने रेलिवेंट नहीं लिया तो 0 क्रेडिट. अगर आपने रेलिवेंट पॉइंट नहीं लिखा, आपने पेज भर दिए 2 और उसमें मतलब का कुछ भी नहीं है, तो यू वुड गेट 0 मार्क्स. ए बिग क्रॉस एंड यू वुड बी गेटिंग 0 मार्क्स. Yes, Farhad, there is no negative marking. There is no negative marking. There is no negative marking in MCQs or case study based questions. There is no negative marking at all at intermediate level or at final level.
Yes, Gunjan, you are asking again question number. What is you are asking question relating to chapter 1? Okay. What is difference between engagement and assurance engagement? Like engagement is a general term used when somebody engages a chartered accountant to this service is, we call it as engagement. But assurance engagement is defined to mean those engagements which provide assurance, in which auditor provides assurance, in which auditor gives his report providing assurance. Like in while giving auditing services, the auditor provides assurance. So it is an example of assurance engagement. In review services, also the auditor provides assurance. It is again an example of assurance engagement. But while say in compilation engagement, where the practitioner only helps the company in preparation of financial statements, no assurance is provided. The practitioner gives only a simple report stating that we have assisted you in preparing financial statements. He does not provide any assurance, he does not provide any comfort. So engagement is a broad category. One category is assurance engagement, and other category is engagements not dealing with assurance. Okay. Yes, Mamta, you are saying you have 3.11, test your understanding 3.11. So it relates today. So first question was related to Mamta inherent risk. से कई कंपनीज हैं, आपको एक कंपनी है जो कि पैडी स्टबल बर्निंग के सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। पैडी की जो जब पैडी क्रॉप इज हार्वेस्टेड, सो जो स्टबल निकलती है उसको डिस्पोज ऑफ करने में फार्मर्स की हेल्प करती है। सो लेकिन ये एक नया बिजनेस मॉडल है। द क्वेश्चन सेज दैट इट इज ए न्यू बिजनेस मॉडल एंड मैनी कंपनीज हैव नॉट परफॉर्म वेल, दे आर फेलिंग, उनको सेल्स नहीं है या इनकम नहीं है। सो आप अगर ऐसी किसी कंपनी के ऑडिटर हैं तो इस सिचुएशन में कौन सा रिस्क है? इस सिचुएशन में इनहेरेंट रिस्क है, क्योंकि दिस रिस्क इज कमिंग फ्रॉम द नेचर ऑफ बिजनेस इटसेल्फ। The company is in such type of business that many of the companies have failed. Okay. Yes, Mansi, I am joining late. So that is for you to see, Mansi, how you manage. No, sampling and other procedures, these do not fall under risk assessment procedures. Other procedures, there is a separate category for other procedures, further procedures, which we would be doing at in a little way at the end of this chapter, and also in chapter 4. Mamta, again, I have cleared your doubts regarding test your understanding question. Yes, Kalkotar, audit risk procedure. Probably you are asking about risk assessment procedure. Yes, this is done while conducting audit. This is very much part of audit plan,
and this is part of audit procedures. So risk assessment procedure is part of audit procedure. It is the audit has started now. No, there is no Srinivasan, there is no common checklist as such. There is no common checklist and there is no standard procedure in a practical scenario. You have to devise your own one. That is where your professional expertise comes into play. Yes, Akshay, you can read the essays if you desire so for increasing your knowledge. Now both groups or single group, Swaroop, this is for you to decide. But remember, there would be 6 papers and it would be very content heavy. So agar if you have the capabilities, if you have the time, if you have started your preparations right now for students who are appearing for both groups, I am telling you that for them time is short. उनके लिए कोई टाइम ज्यादा नहीं है जो लोग बोथ ग्रुप्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए टाइम शॉर्ट है स्टूडेंट्स. 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी, 6 पेपर्स की तैयारी करनी, इट इज नॉट एन इजी जॉब एंड टू, और उसके लिए काफी डिवोशन, काफी टाइम चाहिए स्टूडेंट्स. Students, so this is all for today. So see you again on Monday. So thank you, students. Thank you so much. Thank you for listening to me and to CA Rajiv Sachdeva sir. And if again I am telling you, if you have any query, if you have any doubts, you can call him. He has given his numbers and I have also shared his number with you. Any student who has difficulty in understanding or who is not able to understand, or he or she has got any difficulty, he can contact CA Rajiv Sachdeva sir on his mobile numbers. Okay, he will definitely respond to you, maybe a little bit late or at that time, depending upon the situation, he might be busy, but he would definitely respond to you. Okay, so thank you guys, thank you so much.